So the topic for today is position of women in ancient India. Am I audible? Yes, sir, Yes, you are sir. audible. See, Yes, sir. when we talk about the stats or position of women in ancient India or medieval India, you will find one thing that it never remained the same. And it varied from region to region also, and even from religion to religion. When you talk about the stats of women in Buddhism, it was different. And when you talk about the position of women in Hinduism, it was a bit different from that of the Buddhism even. And when in medieval times, you talk the stats of women in Islam or in Muslim society, that was also different from that of the other cultures. जो हमें Good morning, sir. good morning everyone. And please mute your mic. And the topic is position of women in ancient India. In Rigvedic period, you have seen that Rigvedic society was different from that of the later Vedic society, or it was totally different from the subsequent history of India. In Rigvedic period, the position of women was comparatively better. कोई मुझे बता सकता है किस तरह की पोजीशन थी वुमेन की? आपने कहीं बार पढ़ा होगा, कुछ थोड़ी बहुत एग्जांपल्स दे दो मुझे. Anyone? What was the position of women in Rigvedic society? सर उनको इक्वली वो किया जाता था. उनकी पार्टिसिपेशन इकोनॉमी में इक्वली होती थी सर. So in Rigvedic society, what we find is that, as I told you, that their position was comparatively better. What does that mean is that in subsequent period, their position and status that got degraded. In early Vedic period, we see that, what we see is that there was no sati in Rigvedic period. In Rigvedic period, there was no sati system. There were no child marriages. There were no child marriages. And you have also seen that women were also taking part in the deliberations of the Sabha and Samiti, the popular assemblies of this Rigvedic period. Kya thi? Popular assemblies of Rigvedic period? Sabha and Samiti. Samiti, sir. In Sabha and Samiti, what you find is that even women of the time in Rigvedic period, women, they were participating in the deliberations of Sabha and Samiti. And they are free of they're having a freedom to choose their husband also in that Yes, period. exactly. Sayamvara jise kehte hain. That also continued in the subsequent period. It was generally confined to the upper class or the elite women. Sayamvara, जिसमें वो खुद ही एक सीरियल भी बना था किसी टेलीविजन चैनल पे, उसका नाम ही स्वयंवरा था. देखा था किसी ने? हाँ? सोनी पे No, sir. No, sir. जी टीवी पे चल रहा है, I think. No, sir, नहीं देखा. हाँ, उसमें राखी सावंत डोमिनेंट रही थी उस सीरियल में. So what we see is that in Rigvedic period, comparatively, the position of women is better, but still, she is said to have. She is said to be dependent on these male members of the society. Like in her childhood, she was dependent on her father. In her childhood, she was right from the beginning. She was dependent in her childhood. She was dependent on her father. In her youth, she was dependent on her. बताओ, मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ. Youth, The husband. In old age, on her sons. Exactly. So it is said that she was always dependent on the male members of the society, even though she was comparatively, she was enjoying a better position in Rigvedic society, as sati system was not there, child marriages were not there. She could take part in political deliberation, politics of the time, as she was taking part in Sabha and Samiti deliberations. But she was also enjoying religious freedom, as we have certain
these women seers who even compose the hymns of Rigved. ठीक है, hymns जो होते हैं ना, श्लोक क्या बोलते हैं उनको हिंदी में? श्लोक ना? Yes, sir. So it is said that even certain verses of this Vedic literature, they have been composed by the women. So comparatively, they are enjoying good position. But with the passage of time, when this later Vedic period is coming to the fore, what we see along with other change in the society, like we have seen what change in the society? The emergence of Varna system. Along with that, we have also seen that the position of women is now that got degraded, that got, you can say that was completely now deteriorated. That position of women that they were enjoying in early Vedic period. Now what you find is that she was now bracketed along with the Shudra. When Varna system came to the fore, when Varna system was established in the society came to be divided along Varna lines. What you find is that जो women की position थी. Actually, there is another class going on. Actually, there is another class going on in the chamber. That is why, and I think you have to compromise with that. I will keep this mic close to my mouth. I think it may help. Now we will start with MSMEs Act 2006. So what we find is that in later Vedic period, the society is now divided along Varna lines or caste lines. And in this caste structure, the woman was also accorded a position that was along with the Shudra. You know that the position of the Shudra was very degraded one. It was very bad, as Shudra was not given many rights. He was denied many such rights that were enjoyed by other sections of the society. So women, along with Shudra, she was given the low stats in the society. आप ये देख रहे हैं कि that she was not allowed to listen to the Vedas. She was not allowed to read the Vedas along with the Shudra. Even she was not given any type of God. That was only in the Gupta period on towards this 3rd or 4th century AD that she was allowed to listen to the Vedas along with the Shudra, and they were also given that God, Shudras को जो God दिया गया था, Krishna God, that they can now worship this God. So what we find in the position of this women, as I told you, that it never remained the same throughout this period of our study, and it varied from region to region, and it even varied from class to class. Upper class women were enjoying one kind of status, and lower class women were having different kind of status. We will discuss those things. तो property के मामले में, what kind of property rights she was enjoying? जो woman थी, she was having only the only property right was that of स्त्रीधन. क्या कहते हैं उसे? स्त्रीधन. हाँ, स्त्रीधन जो होता है women's property, उसमें क्या होता है? In the form of jewelry. She was allowed a property. She was not allowed to own the land. She was not allowed to own the house, etc. But she was not allowed to own the industries, etc. But she was allowed the property in the form of stridhan, that is the women's property, in the form of jewelry. किस form में वो possess कर सकती है property? Jewelry में, and that too was, you can say that in the time of emergency, husband has complete control over that stridhan. Husband was given the right that in case that he's in dire need of money, he can sell out the stridhan, he can sell out the property of his wife in order to meet the emergency, financial emergency. Ab property rights kya hai? Only stridhan in the form of what? In the form of jewelry, and she was also allowed to possess money up to 2,000 pannas. पन्ना उस टाइम पे यूनिट ऑफ करेंसी थी, जिस तरह से आज रुपये को बोलते हैं। उस टाइम पे 2000 2 रुपया 3 रुपये नहीं बोला जाता था, वो लेटर डेवलपमेंट है। उस टाइम पे 1 पन्ना 2 पन्ना 3 पन्ना बोला जाता था। ठीक है, समझ आया? पन्ना कुछ हो गया उस टाइम पे। हाँ, सुन रहे हैं ना? Yes, sir. So she was allowed
to possess money up to 2,000 pannas. Again, as I told you that in times of emergency, husband has complete control, husband has complete right to sell or to use the Stridan or that property of the women. तो ये हम देख रहे हैं with the passage of time, even the sati custom started in India, and the first such instance of sati that we got is from Iran in Madhya Pradesh. जो मध्य प्रदेश है, first reference of sati, first written reference of sati, which modern historians have found, is in an inscription that we found at Iran in Madhya Pradesh. That is dated to 510 AD. 510 AD में हमें एक इंस्क्रिप्शन मिलती है जिसमें एक औरत सती हो गई थी. She had performed this sati, and it was recorded in that inscription. So this is the first reference, this is the first evidence in India that speaks about that a woman went sati. ठीक है, समझ आ रहा है? ये याद रखना कब हुआ है सती, फर्स्ट रेफरेंस कब है, ये अक्सर आपके एग्जाम्स में आता है. कब हुआ है? 510 AD. 10 में कहाँ, कौन सी इंस्क्रिप्शन कहाँ पे मिली? ईरान इंस्क्रिप्शन ईरान मध्य मध्य प्रदेश. प्रदेश. हाँ, ठीक है. लेकिन ये भी आप देखेंगे that in Brahminical religion, जिसको उस समय पे Brahminical religion कहते थे, हिंदुइज्म आज का, तो बुद्धिज्म की अगर बात करें, when Buddhism emerged, Buddhism gave comparatively a good status to the woman. जो woman थी, उसको क्या दिया? Comparatively a good status, because she was allowed to enter the Sangha, जो religious या monastic order of the Buddhism जो था. Now even the women can become the members of that Sangha along with the men. जो बुद्धिस्ट संघा था उसमें जो monks होते थे, भिक्षु जो मेल होते थे और भिक्षुणी जो फीमेल होती थी, both male and female were allowed to the Buddhist Sangha. That shows that the position or the status of women was good in Buddhist society as compared to Brahminical society. So उसके बाद हम क्या देखते हैं? उसके बाद कुछ और चीजें हमें रेफरेंसेस मिलती हैं which speaks about the status of women in ancient India. That is, this woman was always expected that she should take care of the husband. पति क्या कहते हैं उसको? पति हिंदी में क्या कहते हैं? पतिव्रता. पतिव्रता. पतिव्रता जो होती है, मतलब उसको क्या किया जा रहा था, इसके दिमाग में सोसाइटी में एक प्रोपेगेंडा के तौर पे भी कह सकते हैं, एक कंसेंट के मैन्युफैक्चर कंसेंट जिस तरह किया जाता है, उस तरह से किताबों में रिलीजियस टेक्स्ट में लिखा जाता था. दैट इज द ड्यूटी ऑफ द वुमन टू टेक केयर ऑफ हर हस्बैंड. हस्बैंड जब घर आए तो उसके पैर दबाए, उससे पहले, उसके बाद खाना खाए और उसके बाद सोए और उससे पहले जागे. ठीक है. Even one story is like देखो उस तरह से सोसाइटी में ये चीजें कैसे आती है, सोसाइटी में चीजें कैसे कंस्ट्रक्ट की जाती है. जैसे एक कहानी है, एक बीवी जो थी वो हस्बैंड उसकी गोद में सर रखा हुआ था. ठीक है. तो विंटर का मौसम था, आग जल रही थी, वो आग सेक रहे थे, वो they were just warming themselves, और उनका जो बच्चा था, बेटा था, he just crawled towards that fire. और उस औरत ने, किताबों में बार बार रिपीट किया जाए so that women को बताया जाए और उसी तरह से उनकी साइकोलॉजिकल जो सेटअप है, मेकअप है उनका माइंड का, उसी तरह से बने. जब औरत का हस्बैंड सोया हुआ था उसकी गोद में, बच्चा उसका आग की तरफ जा रहा था, उसने कोशिश नहीं की. She did not attempt to stop that child. उसने कहा मेरा हस्बैंड डिस्टर्ब हो जाएगा. So much devoted she was towards her husband. और it is said that उसने दिल ही दिल में दुआ की that God, जो God से अग्नि होती है, उसको बताया to protect my son. And it is said कि जो God's अग्नि है वो बहुत खुश हुई और उसका बच्चा आग में भी चला गया और वो आग में जैसे फूलों के साथ खेल रहा है. क्या कर रहा था? फूलों के साथ. ये किस लिए दिखाया गया, किस लिए ये कंस्ट्रक्ट किया जा रहा था? So that these women can become more devoted towards their husband. As you know that the society was completely male dominated society was there. समझ आई ये बात? किस लिए ये सब चीजें की जाती थी? So that
सोसाइटी की जो कंस्ट्रक्शन की जाए इसे अकॉर्डिंगली की जाए ताकि जो वुमेन है दे बिकेम सबऑर्डिनेट टू द मेल मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी। अब ये भी ऐसे ऐसे रूल्स थे, जैसे अगर आप शूद्रा को कोई मारता है या किसी औरत का मर्डर होता है तो उसके लिए पनिशमेंट सेम थी। अगर ब्राह्मण को कोई मारता उसके लिए सीरियस पनिशमेंट थी, क्षत्रिय को कोई मारता उसके लिए सीरियस पनिशमेंट थी, लेकिन अगर शूद्रा को कोई मारता उसको 10 गाय से काम चला लेते थे, या औरत को कोई मारता 10 गाय से चला लेते थे। ब्राह्मण जो मेल मेंबर ऑफ द अपर सोसाइटी जो थे, अपर क्लास जो थे, जैसे ब्राह्मण थे, उनके लिए अलग प्रिविलेज थे, बट दिस वाज नॉट गिवन टू द वुमेन ऑफ दैट क्लास। अगर ब्राह्मण वुमेन होती थी, शी वाज नॉट गिवन द सेम राइट्स एज वाज एंजॉयड बाय द मेल मेंबर्स ऑफ हिज वर्ण। अगर ब्राह्मण वुमन है और ब्राह्मण मेल है, they were not enjoying the same rights, even if they belong to the same class. As I told you that she was always dependent on her husband, and it was in the religious teachings that if she is leaving her house without informing her husband, she should be fined these much pannas, and she should be given this kind of punishment. अगर वो पड़ोसी औरत के पास जाती है बिना अपने हस्बैंड को इन्फॉर्म किए हुए, उसका हस्बैंड सोया हुआ है, तो उसको इस तरह की पनिशमेंट की देनी चाहिए। So her freedom was always curtailed. But one important thing you should remember is that comparatively, if you study the societies of the other societies of the world of that time, you will find that still the position of women in ancient India was comparatively better than the women of other societies. Like European society आप कहेंगे या Middle Eastern societies की बात करें, so Indian women was still comparatively she was enjoying better position, क्योंकि the dominance of males in those societies was even much higher than that of the India. ये भी नहीं है कि that women was not respected in ancient Indian society. एक अच्छी woman जो हो, मतलब as per the religious teachings, कुछ criteria उसके लिए हैं कि husband की जो खिदमत करे तो वो देवी का रूप है, ठीक है, गॉडेसेस भी बहुत सारी थी, उससे भी एक वुमेन का स्टेटस पता चलता है कि जो अच्छी वुमेन के बारे में एज पर दीज अच्छी सो कॉल्ड अच्छी वुमेन, उनके हिसाब से उसकी पोजीशन सही मानी जाती थी एंशिएंट इंडिया में। दूसरी बात जो एंशिएंट इंडिया की है वो आप ये देखेंगे जो पॉलिटिक्स में उनका क्या रोल रहा। एज आई टोल्ड यू दैट इन अर्ली वैदिक पीरियड she was enjoying some political rights as she was taking part in the deliberations of Sabha and Samiti, the popular assemblies of the times. But even you will see, and I also told you that she was also taking part, you can say she also composed some hymns of Rig Ved, and even women were also, you can say they also participated in public discussions. As we have some example of The religious rights, they're having an religious- equal participation in religious rights. they were not complete, they were not enjoying the complete or the equal rights in religious participation. As I told you that she was not enjoying that after the later Vedic period. So कुछ मामलों में आप देख रहे हैं कि that जैसे women they cannot become the pandits, पंडित नहीं बन सकती थी ना वो, तो रिलीजियस राइट्स आप ये नहीं कह सकते दैट शी वाज एंजॉयिंग इक्वल रिलीजियस राइट्स। तो एक गार्गी थी, वुमन गार्गी थी, इट इज सेड दैट शी पार्टिसिपेटेड इन डिस्कशन, शी पार्टिसिपेटेड इन अ डिस्कशन विद सेज यज्ञवल्क्य, जो फेमस सेज यज्ञवल्क्य है, शी पार्टिसिपेटेड इन अ डिस्कशन विद सेज यज्ञवल्क्य एंड शी इम्पोज्ड सच सर्चिंग क्वेश्चंस, ऐसे ऐसे हैरान करने वाले क्वेश्चंस पूछे उस सेज को, दैट सेज जो है जोकिंगली उसको कहा that Gargi just stop asking the questions else your head will drop off. आप ये क्वेश्चंस पूछना बंद कर दो, आपका सर फट जाएगा। मतलब इतने सर्चिंग क्वेश्चंस थे, इतने, मतलब आप ये कह सकते हैं कि that they were very interesting, you can say, from the religious point of view. But she was also having the interest in the religious, you can say, this religious philosophy of the times. ऐसे भी एग्जाम्पल्स हमें मिलती हैं। और आप ये भी देख रहे हैं कुछ एग्जाम्पल्स हमारे पास ऐसी भी हैं that where the women of ancient India they are composing some dramas or they are writing some books on different themes. जो संस्कृत वर्क्स हैं, even we have evidence, be it in South India or be it in North India, we have some
women who had written some books here. अब साइंटिफिक डिस्कवरीज जो होती हैं, जैसे आर्यभट्ट ने जीरो इन्वेंट किया है, या दूसरे जो सश्रुता है या चराग है, उन्होंने इसमें मेडिसिन में कंट्रीब्यूशन दिया, ऐसी कोई वुमेन हमें मिलती नहीं है। ये आप देख रहे हैं ना, देखो आप सदियों से एक क्लास को, एक ग्रुप, सोसाइटी के एक ग्रुप को कह रहे हैं कि दैट यू आर सबऑर्डिनेट क्लास, आपका ये काम नहीं है, तो उसके जीन्स भी अकॉर्डिंगली उसका इंस्टिंक्ट, जब आने वाली जनरेशन है उनका इंस्टिंक्ट भी उसी तरह से डेवलप हो जाता है। ये एक कंस्ट्रक्शन है। आज की वुमेन स्लोली एंड ग्रेजुअली दे आर कंट्रीब्यूटिंग इन द साइंस एंड टेक्नोलॉजी आल्सो। वो जो चीजें हैं वो हट रही हैं अब, क्योंकि वुमेन इज बीइंग प्रोवाइडेड इक्वल अपॉर्चुनिटीज इन ऑल द फील्ड्स ऑफ प्रेजेंट डे सोसाइटी। बट आप देखेंगे सदियों की जो तारीख है, सदियों की जो हिस्ट्री है, उसमें वुमेन वाज डोमिनेटेड बाय मेल मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी। आपका ये रिलीजन में कोई काम नहीं है, आप बैठ जाओ, यू आर जस्ट कन्फाइंड टू द फोर वॉल्स ऑफ द हाउस, आपका काम यही है, खाना पकाना, हस्बैंड की सेवा करना, बच्चे पालना, ठीक है। तो आप ये देख रहे हैं कि उस जमाने में ज्यादातर कोई उस तरह का कंट्रीब्यूशन वुमेन का नहीं रहा, एंड द रीजन इज ओनली बिकॉज शी वाज the expressive class, expressive group of the society. She was expressive member of the society. दूसरी बात ये कि अपर क्लास वुमेन, जैसे मैंने कहा कि दैट अपर क्लास वुमेन they were comparatively enjoying better position in the society. या आप इस तरह से कह सकते हैं, जो गुप्ता पीरियड के टाइम तक डांसिंग और सिंगिंग था, ये एक आर्ट था, एंड ट्रेनिंग दी जाती थी इसमें अपर क्लास वुमेन को। This was not a taboo for the upper class women, as it became in the later history of India. Modern history and medieval history में upper class women were not interested in these kind of arts, जो dancing है या singing है, because it was just confined to that तवाइफ class जो होती है, ठीक है, तो उन्हीं के साथ associate हो गया singing and dancing. Otherwise, in ancient India, the women of upper class even were given training in this singing and dancing. दूसरी चीज जो है पर्दा सिस्टम के बारे में हमें पता नहीं है। एंशिएंट इंडिया में देयर वाज नो सच पर्दा सिस्टम इन एंशिएंट इंडिया, बट स्टिल वुमन वाज कंसीडर्ड लाइक she was confined to the haram. Even in Orient period we have a kind of haram of the medieval times. haram वो होता है women apartment, जो medieval times में haram कहलाया जाता था, तो एंशिएंट इंडिया में अंतपारा कहलाया जाता था। That apartment was guarded by the royal soldiers. जो अपार्टमेंट होता था बादशाह के, उसका अगर वो मार्केट जाती तो उनके साथ बादशाह की ट्रूप जाती। इन दैट सेंस शी वाज प्रोटेक्टेड, अदरवाइज इन द जनरल सोसाइटी देयर वाज नो कांसेप्ट ऑफ पर्दा सिस्टम। मिडिवल सोसाइटी की बात करेंगे तो इट वाज विद द कमिंग ऑफ द मुस्लिम्स दैट हिंदूज वर इन्फ्लुएंस्ड बाय दिस पर्दा सिस्टम। आज भी आप देख रहे हैं, जेठा आ गया आपके पास सामने, ससुर जी आ गए आपके सामने, तो जो बहू ये लोग होते क्या करते हैं, घूंघट बोलते हैं ना उसको, अपना स्कार्फ अपने फेस पे लाती है। क्यों? इट इज नॉट द पार्ट ऑफ हिंदू सोसाइटी, it is because of the influence of the Muslim society that the Hindu woman also was influenced, and she started adopting this parda system, not in the same way as the women, Muslim women are doing this parda, but it is similar to that parda system, ठीक है। पॉलिटिक्स की बात मैंने कही थी, तो हमें कुछ ऐसी भी ancient India में we have some evidence wherein women of the times also participate in the politics. आप देख रहे हैं जो सतवानाज है, सतवानाज ऑफ डेक्कन जो है, that is said to be a matrilineal society. जो पैट्रियार्की होती है, मैट्रियार्की डिफरेंट होती है, where this woman is also enjoying a good place in the society. Like अब गौतमी पुत्र सतकर्णी हमें कॉइन्स मिलती हैं, गौतमी पुत्र, गौतमी उसकी माँ का नाम था, सतकर्णी की माँ का। She is also inscribing coins with these names. She is prefixed his name with the name of his mother, गौतमी। उनकी कॉइन्स पे जो सतवाना किंग्स हैं, उनकी कॉइन्स पे उनकी मदर्स का नाम मिलता है, उनके फादर्स का नाम नहीं मिलता है। That shows that women was also enjoying a good position in the Satvana society or in the society of Satvana times. आप ये भी देख रहे हैं that how Harsha was this King Harsha, how Harsha जो थे
Vardhan dynasty के 7th century BC में, how much they took care of this Harshvardhan और Rajyavardhan था, जो दो भाई हैं, क्योंकि Rajyavardhan ने in the protection of of his sister, he lost his life. तो जो हर्ष थे, उसने भी अपनी बहन को प्रोटेक्ट करने के लिए वो किस हद तक गया, ठीक है? That shows that woman was, it is not like that she was not respected in the society, she was respected in the society, but she was denied many rights that were enjoyed by the male members of the society. And this was, as I told you, this was not confined to the Indian society or to the Indian civilization. This was the case with many other civilizations of the time. Even as I told you that the women enjoyed better position in Indian society than in any other society of the times. Prabhavati Gupta को भी देख रहे हैं, when her husband died, जो वाकाटाका king के साथ उसकी शादी हुई थी, when her husband died and she became the regent and she is just ruling over that kingdom, she became the de facto ruler of that kingdom. ठीक है, आप कश्मीर में देख रहे हैं क्वीन दिद्दा या कोटा रानी, वो भी इसी टाइम के आसपास 8th 9th century के आसपास 9th to 10th century के आसपास they emerged in Kashmir and they are completely dominating the political scene of Kashmir. Kota Rani and Didda of Kashmir. आप ऐसे examples हमें मिल रही हैं कि that women of the time they are also participating in politics of the time, but these were the rare evidence. उसके बाद आप जो है medieval times की बात करें, as I told you that when Muslims established themselves in India under the Turkish Empire, when Muslim society was established in India, they naturally influenced the Hindu society, and Hindu society even influenced the Muslim society. As I told you in the earlier lecture, caste system of India, that even Muslims were influenced by that caste system. As in Islam, there is no caste system. Islamic religion, Islam ka religion hai, that does not support the caste system. But still, you will see in the practical society of the Muslims, caste system is being followed. That is the result of the influence of Hindu society on Muslim society. In the same way, Muslim society also influenced the Hindu society. Hindu society को किस तरह से influence किया? पर्दा सिस्टम, और अभी भी पर्दा सिस्टम है. आप देख रहे हैं जो गांव वगैरह में अभी भी पर्दा सिस्टम है हिंदू सोसाइटी में. आपसे पूछ रहा हूं मैं, पर्दा सिस्टम है? सुन रहे हैं आप? हाँ सर है ना. तो दिस इज द इन्फ्लुएंस ऑफ द मुस्लिम सोसाइटी ऑन दिस हिंदू सोसाइटी. और दूसरी बात जो सती का medieval times में क्या हुआ, it continued during the British period when it was this Lord William Bentinck who just in 1829 was finally abolishing this sati by law, that nobody is allowed to go sati, nobody is allowed to force anybody to go sati, and nobody is allowed to go sati. This is punishable by law. So it was only in 1829 when even the Indians like Raja Ram Mohan Rai, they started a campaign against the sati custom, and they considered it as against the scriptures, shastras, means the religion of Hinduism. So finally, जो East India Company की सरकार थी, it is finally abolishing it by law in 1829 by making a law that prohibited sati. Even before that, in medieval times, you will see different emperors of Muslim society, or you can say different emperors of medieval India. They tried to stop this practice of sati, and they had found it as an inhuman practice. आप अकबर को देख रहे हैं, what he is doing is banning sati, but only the forcible sati. If you are willing to go for sati, you can go. But if somebody is forcing you, that is punishable. That was not acceptable to the Akbar, and Akbar is doing what? He is banning such forcible sati. Later on, Jahangir, Shah Jahan, Aurangzeb, they are also banning the sati. But there was hardly any effect on this practice, and this practice continued well into the modern India. It was only in modern India, as I told you, that it is the English East India Company government that is finally banning it in 1829. But even after that, sati practice continued. Even after independence, you have an example of a princess, or this
रॉयल लेडी फ्रॉम राजस्थान, आई थिंक शी वेंट सती, उसने सती हो गई वो, इवन आफ्टर, किसके बाद, आजादी के बाद. बट दिस वाज जस्ट with the passage of time, when this was banned by law, slowly and gradually this practice disappeared from India, the practice of sati. Infanticide भी medieval times में बहुत होता था. That was another injustice to the women. जो गर्ल्स पैदा होती थी, यही होता उनकी शादी करनी है, उस पर खर्चा होगा, गरीबी थी, तो उनको जिंदा दफनाया जाता था. That practice was also later on prohibited by law in India by these East India Company's government. आप और चीजें भी देख रहे हैं वुमेन पोजीशन में मिडिवल इंडिया में, कि जो मुस्लिम वुमेन जो थी, एक तो उन पे पर्दा सिस्टम था, दे हैड टू बाय रिलीजियस लॉ, वो मुस्लिम वुमेन हैड टू ऑब्जर्व द पर्दा. लेकिन प्रैक्टिकल सोसाइटी दिस वाज नॉट द केस. आपको जो भी आप रिलीजियस स्क्रिप्चर्स में लिखा होता है, इट इज नॉट नेसेसरी that these teachings are being practiced in the society. Even now, some Muslim women would observe this parda. They will follow this practice of parda, and majority of Muslim women does not follow this parda. Majority does not follow this parda. So in medieval society, also the majority Muslim women was not following any parda system. But still it was there, and it was in the religion, and many women were following this parda system. और दूसरा पॉलिटिक्स में आप देख रहे हैं, what was the political participation of the Muslim women. You have already studied about the role of Razia in Sultanate period, how she is becoming the king of Delhi Sultanate, and how she is considered as the first Muslim woman ruler of the world. Razia जो है, रजिया के बारे में पढ़ा है ना आपने? Yes, sir. So she is the Muslim ruler. She is the first Muslim ruler of the world, Razia. And दूसरी चीज ये कि हम जो है during the time of Akbar, आप महामंगा हो या उनकी माँ हमीदा बानो बेगम, they are also actively participating, indirectly they are also participating in this politics. Akbar was even influenced by his foster mother, this Mahamanga, and by his own mother, Hamida Banu Begum. They are involved in court intrigues, court bickerings. जो भी court में politics होती थी, they also participated in that. So they were not holding any administrative post, but they were influencing the policies of the state. आप नूरजहां को आपने देखा, that medieval time में हम मुस्लिम सोसाइटी की जब बात करते हैं, ये नूरजहां को आपने देखा that she is completely running the administration when Jahangir was receded into the background. जहांगीर के टाइम पे उसकी बीवी जो है, उसकी मलिका जो है नूरजहां, she is taking the reins of the administration into her own hands. She is running the administration. She is making the appointments. She is making the transfers. ठीक है, she is pressing the rebellions. It was Noorjahan. So in Muslim society, women also is now seen as participating in the politics of the time. It's not only Noorjahan. आप देख रहे हैं, even some Muslim royal ladies जो थी, they also wrote some works. आप हुमायूं की बहन को देखेंगे, गुलबदन बेगम जो थी, उसने हुमायूं नामा लिखी है. एक बहुत बड़ी पर्शियन में टेक्स्ट बुक है हुमायूं पे, हुमायूं बायोग्राफी उसकी बहन ने लिखी है. आप जहां आरा की बात करें तो शी आल्सो रोट सम लिटरेरी पीसेस. उसका पेन नेम था मखफी जहां आरा. तो ऐसी भी एग्जांपल्स हमें मिलती हैं वेयर मुस्लिम लेडीज, रॉयल लेडीज, दे आर writing some books, they are writing poems, they are writing stories. जैसे also you got to know that Muslim ladies were also participating in the politics, as the example of this Razia and Noorjahan. अगर आप 16th century South India की बात करें, Deccan में, तो वहाँ पे भी चांद बीबी का important रोल रहा है. She was a Muslim and she was ruling over Ahmednagar kingdom. ठीक है, उसको अकबर ने डिफीट भी किया था, अकबर के फोर्सेस ने.
So Muslim women were also participating in the politics as rulers, or they were influencing the policies of the kings of the times. तो ये पोजीशन रही है ये पोजीशन रही है किनकी, women की, from ancient times to medieval times, and that you have now seen that this position was not. अच्छा, मैंने दूसरी बात भी बताई, जो upper class women थी उनकी freedom जो थी comparatively आप उस सेंस में कहेंगे that was completely less than these women of lower classes, क्योंकि lower class की women जो थी they were helping their husbands or their families in the fields, उनको fields में काम करना होता था, खेत वगैरह में, ठीक है, जो कॉर्न ग्राइंड करना होता था, सब्जियां उस तरह से कल्टीवेट करनी होती थी, हस्बैंड्स के साथ खेत में जाते थे, वहां काम करते थे. सो पर्दा सिस्टम जो था, इवन जो पर्दा सिस्टम मैंने कहा जो हिंदू सोसाइटी इन्फ्लुएंस हुई थी पर्दा सिस्टम से, that was also confined to the upper class. ठीक है, it was only in the modern period when this process of Sanskritization started. It is said that in modern India, when the Britishers they started this census, और census में उन्होंने क्या कहा, कास्ट की हायरार्की मेंटेन की, जो लोहार की कास्ट है, ये जो है किसी और कास्ट से, किससे, जो सुनार की कास्ट है वो लोहार से अपर है, जो ब्राह्मण, इस ब्राह्मण की कैटेगरी है, इस ब्राह्मण से अपर हैं, क्षत्रियाज में भी डिफरेंट जातीज थी, ब्राह्मण में डिफरेंट जातीज थी, शूद्राज में डिफरेंट जातीज थी, फिर अनटचेबल्स हुए, ठीक है. तो उन्होंने हायरार्की ऑफ कास्ट शो की उन सेंसस में, और अपनी पोजीशन बेटर बनाने के लिए हर एक जाति ने क्या किया, दे स्टार्टेड टू इमिटेट द वेज ऑफ अपर क्लासेस इन ऑर्डर टू इंक्रीज देयर हायरार्की इन दैट सोसाइटी. ठीक है, अपनी सोशल हायरार्की को, अपना सोशल स्टेटस को हाई करने के लिए दे स्टार्टेड टू इमिटेट द वेज ऑफ अपर क्लास पीपल, and that process is called by a well-known sociologist M.N. Srinivas as process of Sanskritization. ठीक है, so this is like only in modern India that this process started, कि आप वो जो lower class जो है society के, they also started this पर्दा, as this was observed by the upper class women of the Hindu society only until then. तो ये था about the position of women in ancient India. अगर आपको कोई question है तो हम उसको discuss कर सकते हैं. Now I am expecting questions from you. हाँ, please. हाँ. So could you please explain us what is Sanskritization once again? See, Sanskritization is a process in which it is a tendency among the lower classes to imitate the ways of living of upper classes in order to increase their social hierarchy, in order to increase their status in the social hierarchy. अब यही मैंने कहा that in modern times when census was done by the colonial administration, जब ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे सेंसस किया, और उस सेंसस में एक तो पॉपुलेशन का मिलता था, दूसरा ये था कि सोशल पोजीशन ऑफ जातीज क्या है, सोशल पोजीशन ऑफ डिफरेंट क्लासेस क्या है. उसी में लोहार नीचे आता है, सुनार उसके ऊपर आएगा, या वैश्यास का, शूद्रास का, ब्राह्मण्स का अलग अलग क्लासिफिकेशन, और फिर जातीज का. ठीक है, तो अब लोहार का यही है कि उसको पता है जो अपर क्लास है उनकी पोजीशन इसलिए अच्छी है क्योंकि उनकी वुमेन जो है पर्दा करती हैं, उनके आदमी जो है वो ठीक ठाक चलते हैं, वो वेदास उन पे होल्ड रखते हैं. तो इट वाज अ टेंडेंसी अमंग द लोअर क्लासेस टू इमिटेट द वेज ऑफ लिविंग ऑफ अपर क्लासेस जस्ट टू इंक्रीज देयर सोशल स्टेटस. ये था प्रोसेस ऑफ संस्कृताइजेशन. एनीवन एल्स? सर, संस्कृताइजेशन को ग्लोरीफाई कैसे किया गया उस टाइम पे? ग्लोरीफाई नहीं किया गया. दिस वाज in an informal way. ये नहीं होता है कि सबको बोला जाता था आप कर लो संस्कृताइजेशन प्रोसेस. It was just a term that was used by a modern scholar. It was a term that was used for that process that happened in the society. तो ग्लोरीफाई नहीं किया जाता था उसको. ये जस्ट एक टेंडेंसी थी among lower classes to increase their status in social hierarchy of the times.
अपना सोशल स्टेटस बेटर करने के लिए उन्होंने ये प्रोसेस स्टार्ट की कि अपर क्लास वुमेन की तरह या अपर क्लास लोगों की तरह ही बिहेव करें। जैसे लोअर क्लासेस में टेंडेंसी होती थी, इट इज सेड, आई डोंट बिलीव इन दिस, कि वो चोर चकारी में ज्यादा है, मर्डर करेंगे, चोरी करेंगे, ये सब करेंगे, फालतू की बातें करेंगे, गाली गलौज देंगे, ठीक है। तो ये सब चीजें जब सोसाइटी में होती हैं, इट वाज फाउंड अमंग द लोअर क्लासेस एज पर द एविडेंस वी हैव। सो उस प्रोसेस में भी क्या होता है, लोअर क्लास लोगों ने अपनी भाषा भी सही की, गाली गलौज वाले अल्फाज नहीं यूज किए, मॉरलिटी लेवल हाई की, ठीक है, अपना रहने सहने का तरीका सही किया, जिस तरह से ब्राह्मण्स करते थे या अपर क्लास के लोग करते थे, उन्हीं की शूद्रा के दूसरे या वेश्यास जो करते थे, जिस तरह से रहते थे, जिस तरह से चलते थे, जिस तरह से बोलते थे, एक सोशल बिहेवियर को सुधारने का एक तरीका था उनका, अपने सोशल बिहेवियर को सुधारने का एक तरीका था, जस्ट टू इमिटेट। और एग्जांपल उसकी बेस्ट थी कि जो अपर क्लासेस के लोग थे, उनके सामने वही थे लोग जिनको इमिटेट कर सकते थे, तो उनको इमिटेट करके वो अपनी सोशल पोजीशन जो थी सुधारना चाहते थे, उस सोशल हायरार्की में, उस लेडर में ऊपर जाना चाहते थे, जिस पोजीशन को सोसाइटी में सही माना जाता था। ठीक है, हाँ, एनीवन एल्स? अच्छा, अब मैं आप लोगों से पूछता हूँ